Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 1st June 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आप हमारे सारे वीडियोस के लेक्चर हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. You can log into www.inspirationias.org. Along with that, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel. Along with, you can also follow our Telegram channel for the free study materials in the PDF format. You can also join our UPSC and APSC foundation batches, which has been started both in online as well as offline format. Along with next information is all those students who are going to appear for the APSC mains examinations on 8th July. We have started the APSC mains test series from 24th May, and this is the second batch of the Anushilan test series. So we have kept almost around 13 test series. The schedule is in front of you, and for any informations and admission, you can call in this number. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस. आज का हमारा पहला न्यूज जो है वो है लाइट वेट एंड पोर्टेबल सिस्टम से रिलेटेड. रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू डेवलप ए लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम डिजाइन टू ऑपरेट ड्यूरिंग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स. देखिए बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव्स है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को आप आई एम श्योर आप सबको ये फील होता होगा कि दे आर इन ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स लाइक आपके जितने भी आरटीजीएस हो गए, एनआईएफटी हो गए, इवन आईएमपीएस, ये सब कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे होते हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं. And during they create more problem during the catastrophic events like calamities, earthquake or disasters like situations. Even in war situations में भी ये वो काफ़ी मतलब उतने इफेक्टिव नहीं होते. So as they have large amount of, they have to depend upon large amount of networks along with the information technologies, और बहुत ही backend support लगता है इनको to operate. So RBI is thinking about to convert it into a lightweight and portable system which will be more effective for the coming days. न्यूज ये है कि अच्छा आखिर ये लाइट वेट होता क्या है. देखिए आरबीआई इज कॉलिंग इट ए बंकर, इसको बंकर बोल रहा है आरबीआई, एंड इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर बाय ए बेयर मिनिमम स्टाफ इन एक्सीजेंसीज ड्यूरिंग कैलेमिटीज. मतलब मिनिमम, बहुत ही मिनिमम स्टाफ को लेकर इसको ऑपरेट किया जा सकता है. along with not along with that it can also be operated on a minimalistic hardware, बहुत ही कम हार्डवेयर चाहिए एंड सॉफ्टवेयर. along with it could be made active only on a need basis. इसको जब भी जरूरत पड़े तभी इसको इनिशिएट किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. And the infrastructure for this system will be independent of the technologies that underlies the existing system of payment such as UPI, NEFT और RTGS. देखिए ये जो इनिशिएटिव इसलिए भी स्टार्ट किया गया है क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि रिसेंटली जैसे यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते इवन देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पर इस तरह के वॉर अगर हो तो पेमेंट जो गेटवे हो रहे, पूरा पेमेंट फाइनेंशियल मतलब पूरा इन्वायरमेंट कहीं खराब ना हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. तो इट इज बेसिकली बैक एंड सपोर्ट कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर जो प्रेजेंट जो गेटवे है वो खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है, देन वी कुड हैव दिस पेमेंट गेटवेज. ठीक है. The system is expected to process transactions that are critical to ensure the stability of the economy, including government and market-related transactions. That is very good initiatives by the RBI. The existing conventional payment systems such as RTGS, NEFT, and UPI are designed to handle large volume of transactions while ensuring sustained availability. Along with that, as a result, they are dependent on complex wired network. ये बहुत ही complex network पे चलता है ये सब, and backed by a advanced IT infrastructure. Getting it? तो इन सब डीमेरिट्स के चलते ही ये जो सिस्टम है आपका जो लाइट वेट एंड पोर्टेबल सिस्टम, इट विल बी मोर इफेक्टिव. नेक्स्ट, जैसे आप लोगों को मालूम होगा नेफ्ट और आरटीजीएस, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है फॉर ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन. It enables transferring fund from the account maintained with any bank to any other bank branch, provided the transaction is attempted between the bank that participate in the NEFT payment system. तो जो बैंक नेफ्ट पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है उनके बीच में ये ट्रांजेक्शन होता है. द पेमेंट मेड बाय नेफ्ट आर प्रोसेस्ड एंड सेटल हावरली बेसिस, मतलब 30 मिनट्स के बैचेस के ऊपर में ये ट्रांजेक्शन होते हैं. एंड कैन बी परफॉर्म 24/7. मिनिमम वैल्यू 1 रुपीज़ होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता. एंड जबकि मनी ट्रांसफर मेड थ्रू नेफ्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. However, RTGS जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विच इज ए पेमेंट मोड वेयर द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अदर इन ए रियल टाइम विदाउट एनी डिले. ठीक है, इसमें डिले नहीं होती. जैसे इसमें क्या होता है 30 मिनट्स का डिले होता है, इसमें किसी भी तरह का डिले नहीं होता है. एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ हाई वैल्यू. And when using the banking method, RTGS is the fastest possible way to transfer money.
ट्रांजेक्शन मेड थ्रू आरटीजीएस आर प्रोसेस्ड ऑन 1-to-1 बेसिस एंड ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म 24/7 और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है 2 लाख का होता है और मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू होता है, अब कोई वैल्यू नहीं होता इसमें, बट कैन वेरी बिटवीन बैंक्स। होप ये सबको समझ में आएगा। तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी होता है आईएमपीएस वगैरह। अपना नेक्स्ट न्यूज जो है दैट इज ग्रेन स्टोरेज प्लान। रिसेंटली द कैबिनेट यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर्मिंग एंड एम्पावरिंग एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी टू क्रिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान in the cooperative sectors. So this is also a very good initiative by the government, and government plans to create the world's largest grain storage plan in the cooperative sector. News ये है, in order to ensure time-bound and uniform implementation of the plan in a professional manner, the Ministry of Cooperations will implement a pilot project in at least 10 selected districts. This is very important. ये कौन ministry start कर रही है? Ministry of Cooperations and 10 selected districts. It will be a pilot project and it would provide valuable insight into various regional requirements of the projects, learning from which will be suitable incorporated for countrywide implementation of the plan. It is an interministerial committee, IMC, will be formed under the chairmanship of the Minister of Cooperations with Minister of Agriculture and Farmer Welfare, Consumer Affairs, Food and Public Distributions, and Food Processing Industries, and secretaries as member to modify guidelines, implement and methodologies of a scheme of respective ministries as when need arises. ठीक है, और ये 8 स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया गया फॉर कन्वर्जेंस। कौन कौन से 8 स्कीम जो कन्वर्ज होंगे इस प्लान के तहत? एक तो होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये वाला। दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। थर्ड जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस, एंड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम्स, एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एंड along with allocations of food grains under the Food Security Act, procurement operations at MSP. Getting it? So these are 8 schemes which are identified for convergence under this plan. इसके अलावा इसका एम, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्लान? बेसिकली द एम इज टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री बाय फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोडाउन एट लेवल ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल credit societies and also enable PSCs to undertake various other activities. Okay? So these are the plans which will help in creating the world's largest grain storage plan in cooperative sectors. चलिए अपना नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज सिटीज 2.0 प्रोग्राम। रिसेंटली अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने चेयर किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसमें उन्होंने बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 मींस सिटीज 2.0 प्रोग्राम। अच्छा ये है क्या? दिस प्रोग्राम इज टू रन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2023 till 2027 एंड इट विल हेल्प टू सप्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको ये क्या करेगा? एक इम्प्लीमेंटेशन करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा। इस प्लान के अंदर में 3 मेजर कंपोनेंट्स है। क्या क्या है? सबसे पहला जो है कि नंबर 1 द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इन अप टू 18 स्मार्ट सिटीज। मतलब फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टू द 18 स्मार्ट सिटीज which aims is to develop project focused on building climate resilient adaptations and mitigations. एक तो ये। सेकेंड जो कंपोनेंट्स है, द स्टेट विल प्रोवाइड सपोर्ट्स टू सेट अप स्ट्रेंथन देयर एग्जिस्टिंग स्टेट क्लाइमेट सेंटर्स, क्लाइमेट सेल्स एंड इक्विवेलेंट। बी क्रिएट स्टेट एंड सिटी लेवल क्लाइमेट डाटा ऑब्जर्वेटरीज। थर्ड फैसिलिटेट क्लाइमेट डाटा ड्रिवन प्लानिंग डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, एंड फोर्थ बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ म्युनिसिपल फंक्शनरीज। गेटिंग इट? तो ये दूसरा कंपोनेंट हुआ। थर्ड जो कंपोनेंट ये है कि द इट हेल्प्स इन द इंटरवेंशन एट ऑल द 3 levels, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड सिटी, टू फर्दर क्लाइमेट गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया। एंड दिस विल बी डन थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, नॉलेज डिसेमिनेशंस, पार्टनरशिप, बिल्डिंग कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सिटीज के। इट विल ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलर इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दीज आर द सर्कुलर इकोनॉमी। एंड सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली बोलता क्या है कि इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एम्स टू डीकपल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम रिसोर्स कंजम्पशंस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस. It is an alternative to the traditional linear economy which follows take, make, dispose pattern. And in this pattern, resources are extracted, processed into product, used and then discarded as waste. Okay? In contrast, the circular economy aims to close the loop by keeping material products and resource in continuous use, maximizing their value and minimizing waste and pollutions. ये सबसे जरूरी है सर्कुलर इकोनॉमी में। जैसे सपोज करो अगर कभी आप जैसे कोई कुछ भी लेते हो, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो, उसमें जो डब्बे में आते हैं उस डब्बे को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं।
एंड वी कैन यूज, मतलब अगर मान लो उसको यूज ना करके अगर हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं तो दैट विल बी बेसिकली इट विल क्रिएट ए वेस्ट. However, अगर इस डब्बे को हम लोग यूज करते हैं, दिस डब्बा विल बी यूज फॉर द फर्दर यूज. लाइक सपोज करो आप दही का डब्बा खरीद कर लाए, और that can be packaged also. That can also have a flexible or reusable box. That box can be reused for the further storage of anything. तो उसका कहीं ना कहीं उसका लाइफ बढ़ जा रहा है, उसका रीयूज हो रहा है. एंड दिस इज बेसिकली नोन एज द सर्कुलर इकोनॉमी. गेटिंग इट? एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट न्यूज जो है पुराना किला से रिलेटेड. इन द रिसेंटली वहां पर कुछ एक्सकवेशन हुआ था, एंड देयर वी हैव फाउंड कि दे हैव डिस्कवर्ड और अनकवर्ड एविडेंसेस ऑफ द कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ द सिटी सिंस द प्रीमोरियन एरा. है क्या, देखिए जरा. पुराना किला के बारे में अगर समझा जाए तो इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेजेंट सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली एंड बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. इंपॉर्टेंट है. The present citadel of Purana Killa started its construction in the reign of Humayun and was completed by the Sher Shah Suri, ठीक है, the Lion King. And the Killa was inspired by a Jama Masjid which was established 15 years before the reconstruction of the Killa. These are bit certain critical facts which is very important. आपको एक प्रीलिम से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट जो है इसके बारे में, तो इसका आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया 1.5 किलोमीटर्स, and it has 3 gates that are displayed of a happy blend of Hindu Muslim style of architectures. सबसे पहला बड़ा दरवाजा और द बिग गेट फेसिंग वेस्ट, हुमायूं गेट फेसिंग साउथ, एंड तलाकी गेट which is often referred to as the forbidden gate. ठीक है. All of the gates are double storied and comprise of huge semicircular bastions flanking either of their sides. These bastions are equal in frequency except for in the westward wall, where they are built at a distance of 73 meters from each other. Next, the eastern and western walls of the Killa are the tallest, which were specifically designed for safeguarding the kings residing within the 4 walls. All the walls surrounding the Killas are 0.3 meters thick and supported by a bastion. These are certain architectural style of the Purana Killa. Bit important for the prelims examinations. So that's all for today in Daily News Analysis. अपना next segment है, that is the comprehensive answer writing sections. आज का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ग्राफीन से. एक्सप्लेन द यूनिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफीन, सजेस्ट ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू हार्नेस द पोटेंशियल्स ऑफ ग्राफीन एंड इंश्योर्स इंडियाज पार्टिसिपेशन इन दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट इज साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 रिलेटेड ये टॉपिक था. सो write your answer, send us in this number and we are going to revert your checked answers. That's all for today in Daily News Analysis. And please do subscribe to our YouTube channel along with our Facebook page for such other videos. Thank you.